Hello friend, in this video I will discuss examination ask question solution. I have taken this question from June 22 third mid examination IGNOU BA Economics for course code BECC 104 mathematical method in economics 2. And you can see here question given a utility function u equal to a x to the power alpha y to the power beta. This question has a two parts. This question carry 20 marks. Okay, and simply you can get the 20 marks. Okay, you need to stay till end of this video. First, derive the marginal utility for x and y. And second part of this question is asking you derive the n expression for the slope of indifference curve. तो बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं. पहला पार्ट्स का सलूशन करते हैं, फिर देयर आफ्टर आई विल सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आस्क derive an expression for the slope of indifference curve. Now focus on first part, that is A. Utility is a given u equal to a x to the power alpha y to the power beta, and derive the marginal utility. And you can see here u is the function of two variable x and y where a is the constant. So we need to take the partial derivative of utility function with respect to x yielding marginal utility of goods x, and similarly we can get marginal utility of goods y just taking the partial derivative of u with respect to y. MUX stand for marginal utility of goods x, just taking the partial derivative लेना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. बट in order to understand this thing you know partial derivative very well. You are aware of टेक्निक ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है, तो यहाँ आसानी से आप इसको कर सकते हैं. तो ए अपने जगह पर रहेगा, अल्फा आ जाएगा कम फर्स्ट, एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन वाई टू द पावर बीटा. अरेंज दिस थिंग. ए नो फर्स्ट राइटिंग अल्फा, देन ए एक्स टू द पावर अल्फा. Here x to the power alpha minus 1, it can be written x to the power alpha times x to the power minus 1, and as per law of indices it can be written x to the power alpha by x. No problem. So this can written here x, and now y to the power beta. लेकिन इसके लिए लॉ ऑफ इंडिसेस आपको जाननी पड़ेगी. ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस मैं बता देता हूँ नए लोगों के लिए. ए टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एन रहेगा, तो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन. या डायरेक्ट भी इसको ऐसे करने की क्या जरूरत, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए टू द पावर एम बाय ए टू द पावर एन. बस वही चीज़ डायरेक्ट यहाँ लिखने की ज़रूरत है. ठीक है, ये होता है फार्मूला. Similarly, we are in position to get the marginal utility of goods x just taking the partial derivative of u with respect to y. And now this time x is a held constant. We are going to measure the rate of change due to unit change in y. First, a remain stable, x is as it is, but we are taking the partial derivative of u with respect to y, beta, and y to the power beta minus 1. It can be arranged a x to the power alpha, beta come first, a x to the power alpha, y to the power beta by y as per law of indices. Now the first part we have solved, and we are entitled and deserve to getting 10 marks. फर्स्ट पार्ट हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी आपको निकालनी है, इतना सिंपल था. सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चंस आस्क अस डेरिवेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इट इज अ वेरी सिंपल.
Now B parts. Slope of indifference curve. Slope of indifference curve is given by MRS between x, y. Marginal rate of substitution between goods x and y. It can be written in another way. Marginal rate of substitution of goods x for y equal to slope of indifference curve. Slope of indifference curve. Indifference curve. First thing. And we know that according to Marshallian utility analysis, according to Marshallian utility analysis, everybody know ratio of marginal utility of goods x to y is equal to ratio of their prices. According to Hicksian utility analysis, marginal rate of substitution between goods x and y equal to ratio of their prices. It become equation number 2. Marginal rate of substitution, it is the rate at which one commodity is a substitute for another commodity. And from the equation 1 and 2, it can be written marginal rate of substitution, that is the slope of indifference curve, marginal utility of x by marginal utility of y. चूंकि ये भी इसके बराबर ये भी है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, तो वही चीज़ मैं लिखा और यहाँ स्लोप ऑफ इंडिफरेंट कर्व है. ऑलरेडी हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई निकाल चुके हैं, तो उसका एक्सप्रेशन हमको लेना है. तो यहाँ पर बनाते हैं, चूँकि हम उसको मिटा नहीं सकते हैं, फिर डबल कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा. तो ये रिलेशन से हम आसानी से निकाल सकते हैं. तो देखते हैं. तो हम लोगों ने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई इक्वल टू mu x बाय mu y. दिस इज द स्लोप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन of goods x for y. What is it? It is the slope of indifference curve. Now substitute the value whatever we got for marginal utility of goods x and marginal utility of goods y. Here the value for marginal utility of goods x, y to the power beta by x, and here is the marginal utility of goods y, a x to the power alpha y to the power beta by y. This is the marginal rate of substitution between goods x and y, that is the slope of indifference curve. And it can be arranged this term as it is रहेगा, alpha x to the power alpha y to the power beta by x, और ये टर्म y ऊपर चला जाएगा इंटू y, और ये टर्म एक समान रहेगा, a x टू दी पावर अल्फा y टू दी पावर बीटा. ठीक है. अब ये टर्म ये और ये कैंसिल, तो इसको हम लिख सकते हैं सजा के अल्फा बाय बीटा. यहाँ से लिए अल्फा और डिनोमिनेटर से बीटा, एंड y बाय x. दिस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दैट इज द marginal rate of substitution between goods x and y. This is the expression for the slope of indifference curve. So this is the complete solution of this questions carrying 20 marks for BECC 104 mathematical method in economics 2. और ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जून टर्म एग्जामिनेशन 22 में पूछा है. इट मे बी आस्क्ड इन जून टर्म एग्जामिनेशन 23 में भी आ सकता है. तो आप 20 नंबर आसानी से इजीली यू कैन गेट 20 मार्क्स. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड. जय हिंद.